So let's start with the first thing you need for your home setup. So what is the first thing that you could need? A computer. Yes, you guessed it right. So सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है कंप्यूटर. कंप्यूटर्स में बेसिकली ऑडियो के लिए दो रेलिवेंट प्लेटफॉर्म्स हैं. एक Macintosh, which is by Apple, and then there is Microsoft Windows PC. So both platforms are equally good. आप किसी को भी चूज कर सकते हैं जो भी आपके बजट में है और जो जिसको भी ऑपरेट करना आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है. यू कैन चूज ईदर आर गुड. The only difference is that कुछ DAW सॉफ्टवेयर Macintosh के लिए आता है स्पेसिफिकली और कुछ PC के लिए जो क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं चलते, बट ज्यादातर यानी कि 90-95% ऑफ ऑल DAW सॉफ्टवेयर जिस पे आप रिकॉर्डिंग करेंगे या प्लेबैक करेंगे वो दोनों मशीन्स पे आता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज मशीन्स. सो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर यू इज ईदर एन i5 और i7 कोर प्रोसेसर, या तो वो ड्यूल कोर हो या क्वाड कोर हो. क्वाड कोर इज बेटर ऑफ कोर्स. The speed should be 2.4 gigahertz upwards, 2.8 भी हो सकती है, 3 gigahertz भी हो सकती है, or more if you want to overclock it, but that will be sufficient. RAM minimum audio के लिए आपको कम से कम 8 GB रखना चाहिए, either on the Mac or on the PC. But I would recommend 16 GB because जैसे आप expand करेंगे और grow करेंगे, you don't want to change your machine. But RAM एक चीज है जो आप PC में add कर सकते हैं, Mac में add करना उतना आसान नहीं है. Again, you can either go for the laptop versions of a Macintosh computer or the desktop version of a Mac or a PC, either way, or a laptop PC. जो भी आपके बजट में, जो भी आपके लिए better suitable है, you can go for it. Or you already might have a computer which might be suitable. Hard disk space, I would recommend minimum 256 GB because जब audio record करेंगे, virtual instruments load करेंगे, then the size of those libraries and instruments can grow up pretty much. And किसी point of time पे you might need an external drive or another internal drive to just handle audio or to just handle your virtual instruments जब वो stage आएगी. But for starting 256 is fine. I think it should be sufficient. So ये हो गई कंप्यूटर की बात. Let's go on to the second thing that you would need. So the software is the second thing that you would need. सॉफ्टवेयर जिस पे आप रिकॉर्डिंग करते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं उसको बोलते हैं DAW यानी कि डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन. So this is the most crucial piece of software that you will ever need to work in music. So basically software is your recording device यानी कि जिसके अंदर आप sounds या audio record करते हैं या अपनी performance as a MIDI performer भी record कर सकते हैं यानी कि drum parts जब record करते हैं, chords जो बजाते हैं, bass lines बजाते हैं, that all is recorded also as a MIDI file or as a MIDI region inside your DAW. So audio and MIDI both exist inside a DAW and they play back from the DAW. DAW में जो भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं उसको एडिट कर सकते हैं, क्वांटाइज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं विद प्लगइन्स. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ DAW. नाउ DAW में देयर आर प्लेंटी ऑफ चॉइसेस लाइक आई वाज सेइंग ऑन Mac and PC. लेट मी नेम अ फ्यू ऑफ द DAW. None is better or worse than the other, but they're all little different in their approach and workflows. So let's start with FL Studio. Yes, I know काफी लोग खुश हो गए और ताली मार रहे होंगे कि मैंने FL का नाम सबसे पहले लिया. So be happy, I'm okay with that. The second thing is Cubase. Steinberg Cubase is also a very popular software, mostly in Europe, also in India, a little bit in the US. Then we have Pro Tools. Pro Tools बड़ा जाना माना मशहूर नाम है. Audio engineers specifically जो हैं उनके लिए सबसे favorite software है Pro Tools. That is very famous in the community. Then there is Logic Pro X जो मैं use करता हूँ. That one only comes on the Macintosh computer and does not work on the PC. So there is Logic X, and then there is also Ableton Live, another very popular software used by DJs, programmers, producers. There's also then newer software like Beatfactory Studio. Then there is Presonus Studio One, and there's also another software called Reaper. और भी कुछ DAWs हैं. You can try them. सबके trial versions available हैं. And then pick one that you really like, or pick a couple of them जिनके आपको different features पसंद हैं, and आप उसके साथ काम कर सकते हैं. I usually stick to one because I want to focus on music and not on learning many DAWs. But then again, since you're starting out, you have the freedom to try many out. So ये हो गया DAW. The third thing that you will need is a MIDI controller. So a MIDI controller basically is a keyboard like this, but जिसमें से सिर्फ आपके performance messages जा रहे हैं, उसकी अपनी internal कोई sound नहीं होती. आप ऐसा भी MIDI controller ले सकते हैं जिसके अंदर अपनी sound हो, लेकिन basic setup के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है. You can just go with something from M Audio, Novation,
Akai, and then there are few other companies, Alesis and other few other companies, जो भी आपके डीलर के पास है. Go and check them out, see जिसकी feel आपको अच्छे लगे, you can go for that. These all usually work via USB, so they're very easy to connect to the computer. And जब अपने DAW में होते हैं तो उसमें जो भी आप virtual instrument load करेंगे उसको बजाने के लिए एक MIDI controller आपको चाहिए. Now the fourth thing is not an essential thing, लेकिन I would recommend it अगर आप vocal recording कर रहे हैं घर में या कुछ instruments record करते हैं जो external हैं, which are not inside the computer, you will definitely need in that case a sound card या audio interface. ये दोनों एक ही चीज के नाम हैं. इस साउंड कार्ड या इंटरफेस में दो चीजें होती हैं. एक होता है A to D कन्वर्टर, यानी कि जो एनालॉग दुनिया से डिजिटल दुनिया में साउंड को कन्वर्ट करता है, और D to A यानी कि जब आप प्लेबैक करते हैं तो उसकी साउंड एनालॉग में दोबारा कन्वर्ट होती है. सो दैट इज अ साउंड कार्ड. यू नीड दैट स्पेसिफिकली अगर आप वोकल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके पास माइक है या आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आता है, वो गिटार बजा रहा है या बेस बजा रहा है या कीबोर्ड्स जो अपने लेके आ रहा है उसकी साउंड कैप्चर करनी है, तो यू नीड एन ऑडियो इंटरफेस. इफ यू ओनली वर्किंग इनसाइड द बॉक्स यानी कि सिर्फ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो मिडी कंट्रोलर and your basic sound card which comes with your computer built in is more than sufficient. That is okay. You do not need to spend right now on audio interface. Audio interface be vary in prices and quality. The cheaper interfaces start with companies like M Audio and Focusrite and Roland, and the more expensive one go on to Universal Audio and companies like Apogee and also Antelope Audio. Those are for more professional producers. आपको इतने महंगे इंटरफेस पहले खरीदने की जरूरत नहीं. You can go with something by Focusrite or like I said by M Audio, and in many cases Motu or Alesis or Roland. There are few companies which make these cheaper interfaces, but they are good nevertheless. They are fine. So external sources record करने के लिए आपको एक ऑडियो इंटरफेस की आवश्यकता है. The other thing then that you might need is a microphone. ये भी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, but you need a mic अगर आप खुद वोकलिस्ट है और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, and then you're putting up a setup for yourself or for a friend vocalist and you are the musician, then you need a microphone. Microphone again you can buy very cheap from companies like M Audio, Warm Audio, and there are few others, and they're more expensive by Neumann and AKG and all those are very high end. लेकिन let me bust this myth for you. आज की डेट में जो cheaper microphones भी मिल रहे हैं, they sound really good, but it usually is a combination of a microphone and a preamp which makes the sound superb. सिर्फ माइक से ही काम नहीं बनता, एक अच्छा preamp भी आपको लेना पड़ेगा, but that is going to be in an advanced video that I will cover. For a basic setup, you can get a basic mic by a company like Blue or Warm Audio or like I was saying M Audio and certain other companies which exist. MXL is another one of them. Rode is another one of them. So अगर आपको vocals की ज़रूरत है, vocals record करने तो mic चाहिए. Otherwise, you do not need a mic. The other thing I want to tell you about is a mixer. So बहुत लोग परेशान होते हैं और मुझे बोलते हैं सर मिक्सर के बिना रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है. So प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अगर आप मल्टीपल सोर्सेस एक बार में रिकॉर्ड नहीं करें, यानी कि आप बैंड अपने घर में रिकॉर्ड नहीं कर रहे या तबला ढोलक वाले सेशंस वाले साथ में रिकॉर्ड नहीं करें, तो आपको मिक्सर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके DAW के अंदर ही जो मिक्सिंग कंसोल है दैट मिक्सेस द साउंड. सो यू डोंट रियली नीड टू गो आउटसाइड ऑन टू एन एनालॉग मिक्सर. दैट इज अगेन अ वेरी हाई एंड थिंग टुडे. अगर आप एनालॉग डोमेन में काम कर रहे हैं, यूर अ प्रो इंजीनियर प्रोड्यूसर, देन यू विल गेट अ मिक्सर फॉर टेस्ट बट नॉट आउट ऑफ a necessity and it's not essential. So mixer की आपको आवश्यकता नहीं है अगर आप अकेले बैठ के घर में काम कर रहे हैं. There are 2-3 things that you're recording. Your sound card will have pretty much 2 to 4 inputs. Basic sound card में होते हैं. अगर आप ड्रम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं तो भी आप 8 या 12 या 16 चैनल साउंड कार्ड खरीद सकते हैं. उस केस में भी आपको मिक्सर की आवश्यकता नहीं है. Everything can be done inside the box for a basic studio setup. So I hope this has cleared a lot of the information ideas in your head. The other thing is, most important thing is listening. So listening आप किस पे करेंगे? You basically need either a pair of headphones or speakers. So cheaper entry point is headphones. Get a nice pair of headphones जिसमें bass और treble response अच्छा है. You can hear your popular songs and hear उसमें bass आ रहा है. That means it's a good headphone. And आजकल most people are doing electronic music, so having a good headphone with good bass response is very crucial. So you can judge कि आपका bass बाहर कैसे sound करेगा. So it's important to get that. Of course, if you can afford speakers or monitors, which is basically studio speakers, then that's even a better option, because then you're not stuck with something stuck in your head or on your ears, and you can listen to the sound playing out in your room. So agar you can afford a basic pair of studio monitors, go for them, or studio speakers, go for them. So there are brands like KRK, again there's M Audio, there is Alesis, there are tons of brands in the cheaper space, KRK and JBL. But then if you want to go expensive, then there are other brands like Genelec, Adam Audio, then there is Focal, and then there's ATC and PMC and few others like Barefoot, but those are for professional studios. Basic ones I just mentioned, the list is going to be here, you can check it out, and that will be good enough. They're not way inferior to the expensive monitors,
yes, but they get the job done and it's perfectly legit if you use it in your studio. Multi-million-dollar recordings have sometimes come from cheap laptops and blown out speakers and headphones. So काफी लोग जो आज की डेट में hits बना रहे हैं, they don't necessarily have a very expensive setup. So I hope that has made you be happy and feel good that you can actually start making great music from such a simple setup and get going. And also about things that you need and things that you really don't need. I hope उसकी clarity आपको आ गई इस वीडियो के बाद. Do subscribe to this channel if you're enjoying this and you want me to make more episodes. I would love to. Comment below, like the last video, I replied to you. I will in this video also as soon as I find time. And I would like to interact with you and know what you want to see. So मुझे कोई topics भेजिए जो आप चाहते हैं कि मैं cover करूं. And I would love to do that in the next episode. So comment below and subscribe and like and share most importantly with your friends so they can also get this information. This is Gaurav saying bye-bye. Namaste.